देन इसमें बहुत सारे सब फैक्टर्स हैं, सॉइल इकोसिस्टम, सॉइल है, देन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हमने बनाया है। नेचर ने क्या बनाया? वाटर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और हमने क्या बनाया? इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम। हम लोग बैठे हुए हैं अर्बन इकोसिस्टम में। अर्बन इकोसिस्टम क्या है? इट इज ए पैरासाइट। जो कुछ हम लेते हैं, हम देते कुछ नहीं, देते क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजारस वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम देते हैं। तो अर्बन सेटिंग इज जस्ट लाइक ए पैरासाइट। तो पैरासिटिक टेंडेंसी को हटाने के लिए वी नीड टू बी जस्ट लाइक नेचुरल इकोसिस्टम। जो इन्वायरमेंट से आप ले रहे हैं, यू सब्स्टिट्यूट इट विद समथिंग व्हिच इज नॉट अब्यूजिंग द इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल वेस्ट क्रिएट करते हैं, वी कैन डू द मैन्योरिंग, कंपोस्टिंग। म्युनिसिपल वेस्ट को कंपोस्ट कर लिया, कंपोस्ट करके खेत में डाल दिया, वी इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी। So that way we will become sustainable. Even urban ecosystem can be sustainable. Agriculture ecosystem can be sustainable. I think at the last breath also you are able to read. हाँ? हो रहा है ना? नहीं तो बीच में जो जगह खाली है, चेयर खाली है, आप आ जाओ। जिसको नहीं दिखती is going to survive. If ecosystem is not there, we will not be able to survive. There is a delicate balance. That balance has to be maintained. Then only the continuity of the life will be there on the ecosystem. Why we need all these things? One, you know that climate change, I will discuss with that. There are other factors. We are developing by taking the resources for the development of humanity or development of the world. And what is the problem we are going to create? Our population is, by 2050 we are going to have more than 10 billion people. कहाँ से आएगा खाने को? कहाँ से घर बनाने को आएगा? कहाँ से फ्यूल आएगा? कहाँ से एनर्जी आएगी? These problems are now increasing. 90% of global population is tropical world, जहाँ पे गरीबी है, वहीं population भी बढ़ रही है। यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, कोरिया में बोल रहे हैं पैसा लो, सब लो, बच्चे पैदा करो, वहाँ population बढ़ नहीं रही। कहाँ बढ़ रही है? जहाँ गरीबी है, वहीं population बढ़ रही है। तो जो मरने वाले और मरने वाले। Growth points, coastal and urban centers. This is again going to be problem. Twice the population is increasing in urban and coastal centers. Urban centers may survive because there is a opportunity of some economic gains. But what will happen to coastal centers? There is one sword of climate change. Water level is going to up and coastal areas will flooded. Another sword is that their population is increasing, and from where they get the food and feed. Buffer which is giving you the oxygen and the rain, all the biodiversity, all the wildlife, they will get reduced and reduced. Nobody knows better than you people. There was no compromise formula between developed and developing nations. तो MDG एकदम चला गया डस्टबिन में. There are social goals, economic goals and environmental goals. Goal. This is the goal. I don't know whether you people are able to see it, but from 1 to 7, it is the social goals. Means poverty निकालना है, zero hunger, good health, quality education, gender equality, clean water and sanitation, and affordable clean energy. These are the 7 points have been assigned to the countries. Please ensure that you meet these targets by 2030. अभी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबको घर, सबको नल में जल, सबको गैस चूल्हा, ये इसी का एक तरह से ऑफशूट है कि कंट्री India has taken in an honest way that will be. Then
inequalities, and then 11 to 15 is for environment. So basis is 5P: people, planet, prosperity, peace and partnership. पहले people को बचाओ, फिर planet को बचाओ, फिर peace कर दो सब जगह, सब prosperity कर दो, peacefully रहो partnership के साथ. अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक इशू है जो क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट कर सकता है. सबसे बड़ा इशू जो हमारे और आपके सबके हाथ में. We all can do a little bit to Madhya Pradesh, Chhattisgarh. You want to take pan to your house. It is the mahua leaf only. They will put the pan and do it like this. mahua का जो stick है उसको ऐसे डालेंगे और लेके जाएंगे. So flower, the yellow color flower. Then the seed. The seed is a ghee. Seed is a ghee, and seed is also a raw material of making soap. You may not be knowing. You go to village, you will see a black color soap available in the shop. That is made of either sal seed or mahua seed. So throughout year, this mahua gives something for the people to survive. It is same with तेतुली. तेतुली का जो सीड है, फ्रूट है, उसको रख दो 10 साल तक, उसको कुछ नहीं होगा. And that is a big source of carbohydrate, vitamin C. Vitamin C is the best source. कौन सा है? तेतुली. And that is organic. No inorganic, no allopathic vitamin C. It is only organic. So keep it. और उसका जूस निकाल के जहाँ भी करना है, सब्जी में डालना है, लहसुन साबर कुछ भी बनाना है, you can do it. So these are the plants. That is why people are not cutting. So these indigenous plants are more required. Now, if you are able to see, I will give you a brief problem of climate change. With whole of the activities in the world, deforestation is accounting for 1.9 gigaton of carbon going up. 1.9 means 10 to the power 12 कर दो, ग्राम का वही 1.9. 10 ton per hectare per year. You are going to trap that carbon dioxide. How much land you need to address all 3 gigaton? 300 million square meter. जितना इंडिया का साइज है, उतना ग्लोबली हमको अगर एरिया मिल जाए, हम प्लांटेशन कर दें, तो हमारी नेट बिल्डअप कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी. और लास्ट 30-40 ईयर्स तक प्लांट्स बढ़ता ही है. 30-40 ईयर्स तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट प्रॉब्लम इज only on 2 counts. One, where is the money to take plantation of 300 million hectares? Developed world, developing world, they are not coming at one platform. Second is, at today's stage we are talking. Tomorrow more industries will come, more emission will be there, salary will become 8, 9. What will happen then? But as on date, it means, अगर कोई pious, best और गॉड गिवन गिफ्ट इस वर्ल्ड में है, तो प्लांट्स को लगाइए जिंदगी में. At least children should read and mug up these things. You should know how एक एक्ट है, लेकिन वो करने नहीं. Then Supreme Court of India has given marvelous judgment in 4 occasions. Nowhere in Act or Article of Constitution you will see that. The interpretation of the Supreme Court has become the law of the land. First is the precautionary principle. You are not fit to be run in industry. The Supreme Court has defined the pollution angle on the doctrine of public trust. What conservation is a matter of public concern and interest, it does fall under public interest. Therefore, petitioner undoubtedly has a meaningful relationship with the issue, as the present constitution under Article 88 has established
sustainable use, and then fair and equitable sharing of benefits. हल्दी, बासमती राइस, रसम चावल का पाउडर, कितना बताएं आपको? सब वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने बोला हमारा पेटेंट करा है. They started patenting, and we had to fight in the court of international law. No, these are all products. Unfortunately, we are not having the records. It comes from generation to generation, mouth to mouth. Grandfather को उसके son को मिला, उसके son को मिला. There was no record or publication or something like that. We had a tough fight. After that, of course, we made this. A plantation is needed. If the plantation is needed, sure, millet also will be next generation जो आ रहा है हमारा. Millet will also be produced in Odisha, where people will make hybrid from millets of Odisha. Because thousands of years it has been coming, same seed is coming in the crop. So how hardy it is. अगर कोई एक seed ले करके आप 50 crop 50 साल से बना रहे हो, how immunity, how resistant it is to the nature, and it is going to be खाली एप्पल खा करके खुश हो गए, लेकिन एप्पल आया कैसे वो तो मालूम नहीं. क्या क्या उसने नेचर से लिया है, इसका उसको किसने प्रोटेक्ट किया है. It is provisioning services, it is regulating services, it is cultural services and supporting services. Agriculture, white foods, fiber, timber, cotton, hemp, silk, biomass, fresh water, living resources, chemicals, natural medicine, pharmaceuticals. These are all provisioning services. We are getting it from nature. That's why we are surviving. And the other services, regulating services. Why forests are known to help the rainfall? है ना? सुनते हो ना? Forest roots are protecting the soil. Erosion कम करते हैं. These are the all regulating services. CO2 sequestration we discussed at length. ये forest करता है, regulate करता है. Water purification. You go to any hill area you go, you will find on the roadside there is spring water coming. You will find a bamboo thing is there and water is coming. People will be drinking. Can you think of any water drinking in Odisha in a place? But hills, that is the best part of the nature. They purify the water in the soil and root zone and give you a clean water. तब पानी सुना है, गर्म पानी होता है. There are hot water zones. Put your rice and rice is cooked. So these are the services given by the nature. Water flow regulation, natural hazard regulation. Natural hazard. कौन सी चीज? बुढ़िया है? तो एग्रीकल्चर क्रॉप होगा नहीं. होगा. जल्दी से नहीं. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं. कहाँ है? पॉलिनेशन हो नहीं. एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्टोरेज जाएगा नहीं. फिर सीड बनेगा नहीं. Bees are so important. So everything is regulated by nature. One component of nature you are going to destroy, you are going to have a total abuse of environment affecting you only. कालिदासा ही affect होगा. और ये साइंस है. जैसे जैसे ट्रीज की एज बढ़ती है, वाटर एक्विफर्स ट्रीज अपने रूट जोन में बढ़ाते हैं. Means they are the water reservoir. Trees are water reservoir of the natural resource and that you get it. You can see ये yellow line देखो, जैसे जैसे trees बढ़ता है, water retention capacity of the root zone increases. This is a research. उसका नाम भी लिखा हुआ है. और किसी को चाहिए तो मुझे मेल करना. I'll send you the paper itself. And the cultural services. Providing services हो गया, regulating services हो गया, cultural services. Why do you go to Vitarkanya? Why do you go to Simlimpa? Why do you go to Chilka? Because it is linked to
think of how many people are going, कितनी वैल्यू है भीतर के लिए, कितनी वैल्यू है चिल्का की. Unfortunately, economic asset जो अटैच है चिल्का से या भीतर के निकाय से, we are not calculating. So ecological economics is not being made into the calculation of the natural asset. We are only taking, अरे वो तो प्लांट है, उनमें 1000 ट्रीज हैं, 1000 पूरा 7000 इतना उनकी कॉस्ट है, बस हो गया. But the value attached is recreation. ये देखिए, why people will go here? लेक के अंदर इतने बड़े रिजर्वायर के अंदर, लेक नेचुरल रिजर्वायर, उसके अंदर ये राजा ने अपना महल बना दिया. तो बनाया राजा ने महल, इंपॉर्टेंस है. ये उदयपुर सिटी है त्रिपुरा में, राजा मानिक देव जो थे उनका एक महल area of Tripura. In the jungle itself you will find this. I have shown you only two. There are hundreds of carvings like this in the jungle, inside the jungle, and people are just pouring in. So the value of the nature is far. Sometimes that is why I say, if a mandir is being built, our plant this size is going to be there. That is, don't take it as religious. Take it as opportunity for economic gains. Lakhs of people will have shops and this, that, and they will start earning because lakhs of people will come. So that is another industry that will give you more return than an industry. Go beyond the religious lines. You see how much, even Varanasi, that what it has been made. The visitors have gone more than 30-40 folds, people say. So they are coming and paying money to only the local vendors are getting benefited. So that economy is coming in the country. And people are getting job and opportunities to earn money. So that is how these type of cultural nutrient cycling, plants, leaf is dying, leaf is coming down, they are decomposing, they are making nutrients, and another tree, seedling is emerging. So one tree is shedding their leaves, it is getting carbon emission will be more, extreme weather condition you will get, nutrient will be either more or less, spiritual and religious values will go, will become just material, just like stone. If you don't have spiritual value, cultural value will diminish, and the existence value will be at stake. So we will not exist also if we are not having the concern about the services, ecological services with the nature. Challenges are more, lot of challenges. Environmentally, we may be more environmentally conscious, but we may be illiterate as far as the village and rural or natural need is. इसीलिए हम illiterate हैं. मैकेसिया, यूकेलिप्टस, राधाचूरा, कृष्णाचूरा, ल्यूसिना, ये सब लगा दे रहे हैं. पढ़े लिखे, PhD किए हुए, MSc किए हुए, IFS में आए हुए, IAS में आए हुए. But what is happening? They are taking the plant and planting, which is of no value. जान तू रोड साइड रे, देखो तू मैकेसिया, यूकेलिप्टस, हाँ? अपन सिंगल बर्ड देखी मेरी, बर्ड उसमें बैठता ही नहीं है. नेस्टिंग का तो बात छोड़ो. No bird will sit because the allopathic impact of those plants are so severe. जो tannin और जो fiber उसमें content इतना ज़्यादा smell आता है, and with that smell they will just go away. तो इसलिए बर्ड का नेस्टिंग नहीं मिलेगा, बर्ड को रहने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा. कैसे यूकेलिप्टस से क्या होगा? ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होता भी है तो रॉन्ग साइड में. पीपल आर नॉट एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द लोकल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल इंपैक्ट विद द स्पीसीज एंड इकोसिस्टम. दैट इज व्हाट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम. आइडेंटिफाइंग, रिलाइंग ऑन द राइट स्टेक होल्डर्स. आज बहुत सारे एनजीओ आ गए इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, बहुत पैसा मिलता है, लेकिन काम क्या करते हैं? दैट इज द प्रॉब्लम. पैसा ले लो, बैठ के 5 स्टार होटल में
गोलमेज लेयर करके अब अच्छा सा बात कर लो, गॉड इज फाइनल इम्पैक्ट, nothing in the ground. So there are stakeholders, they seem to be bigger because they are powerful and approachable to the high ups, but net impact is environmental deterioration is still going. Cooperation from stakeholders, गांव में जाते हैं तो अपना प्लांट लेकर के भुवनेश्वर से जाएंगे, गांव वालों को बोलेंगे ये प्लांट में लगा दो। अरे भाई, wait for some time, have meeting with village people, ask them which plant you need. No, I have got this plant, I will plant it. Why should they protect? कल को गाय छोड़ देंगे, बकरी छोड़ देंगे, काट के खाओ, उनकी जरूरत नहीं है, क्यों रखें? So that is where the problem is. You don't appreciate. You don't take cooperation from the stakeholders. Why should they protect? इसीलिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में जितना प्लांटेशन होता है हिंटरलैंड में और विलेज साइड में, वो दूसरे साल आपको दिखेगा, because as per need you are not doing, as per microclimate you are not doing, you are taking the urban concept and taking it to rural concept, nothing will come up. That is another problem. Environment literacy is needed, like आज तो लोग environment के बन गए ब्रिगेड ना, it is a consumption based economy, but it is not a production based economy. अगर इसको प्रोडक्शन बेस्ड बनाना है, बी ए कॉन्शियस सिटीजन, प्लास्टिक यूज मत करो, पब्लिक सर्विस की बसें यूज करो, लोग गाड़ी लेके कि हम अपनी गाड़ी जाएंगे, पब्लिक सर्विस में जाएंगे, बट एज फार एज पॉसिबल। दूसरी साइड दिखाता हूं, ये जो ग्रीन लाइन है ये वर्ल्ड की बायो कैपेसिटी है, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्स को हार्वेस्ट अगर किया जाए तो 1.8 ग्लोबल हेक्टेयर पर कैपिटल, हमको जीने के लिए 1.8 हेक्टेयर चाहिए। अब दिस स्पीशीज विल डाई आउट। आज टेम्परेचर अगर बढ़ गया यहाँ का, क्या होगा? सपोज टेम्परेचर गोज एक्सट्रीम, वी विल शिफ्ट। जिसके पास पैसा है वो तो दार्जिलिंग में घर बना लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है क्या करेगा? वो मर जाएगा। इसी से टाइगर क्यों बल्लाकुंडी में दिख रहा है? हैबिटेट उसका खत्म हो रहा है। Environmental jurisprudence is also now a big subject in the court of law, but awareness सबको हो जाए ठीक है, एक्शन कहाँ? अवेयरनेस शुड बी लिंक टू द एक्शनेबल सिस्टम। अवेयरनेस everybody can teach you, everybody can give you प्रोटेक्ट करो, but who will do the protection? Teaching will not only be sufficient.